Hello students, welcome to Krishnas Maths. आज हम exercise 7A रो question number 2 to question number 11 पर्यंत करियो. Usually ए question गुडा एग्जाम रे आसु. ठीक अछि. जो question number 1 कले सेथुरु 2 मार्क्स रे आसले आसपारे 2 मार्क या 1 मार्क रे आसले एगुडा आसुनी खाली concept building question गुडा गुडा. आ या पूर्वरु हमें एबे तो डिफरेंशियल कैलकुलस हमर स्टार्ट हो जाई कंटिन्यूटी हमें गोटे चैप्टर करता है आ या सहित जदि चैनल रो नुआ अछ से मानु पय कहूची चैनल टाको सब्सक्राइब कर दो लाइक और शेयर करियो सब बेले आ ता सहित तुम पय 2019 20 21 22 ये सब रो CHSE रो बोर्ड पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन अछि जदि एमसीक्यू पढियो चाहछे एमसीक्यू सीरीज अछि अराउंड 500 प्लस एमसीक्यूस अछि डिफरेंट वीडियो देखले आ सब चैप्टर रो प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन पय चार चारटा वीडियो बनै रखा अछि फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम चार चारटा वीडियो रखु सेगुडा हम देख पारी. ठीक अछि. तो स्टार्ट करियो हमर क्वेश्चन नंबर 2 कोन दे देखो if a function f is continuous at x equal to a देखो since f of x is continuous at x equal to a since f of x is continuous at x is equal to a therefore limit x tends to a minus f of x will be equal to limit x tends to a plus f of x will be equal to f of a. Limit x tends to a minus f of x means limit h tends to 0 f of a minus h will be equal to limit h tends to 0 f of a plus f of h and both is equal to f of a. Now first question कौन है देखो limit h tends to 0 half of f of a plus h plus f of a minus h. नहीं but f of a plus h f of a minus h both equal to f of a, so this is equal to half of f of a plus f of a. f of a plus f of a कौन है 2 times f of a 2 times f of a 2 cancel है so this is equal to f of a. First है f of a. Second देखो this is equal to limit h tends to 0 half of f of a plus h minus f of a minus h. अब कहीं ना फंक्शन कौन अच्छी कंटिन्यूअस अच्छी ये दुईटा जगह वैल्यू इक्वल टू f of a अच्छी तो दुईटा जगह हम कौन कर f of a पुट कर दो f of a minus f of a कौन है 0 है कैंसिल है 0 तो 0/2 इज आल्सो इक्वल टू 0 एकदम बेसिक क्वेश्चन किछि नहीं. सेकंड देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which the function is continuous. देखो जदि फंक्शन कंटिन्यूअस अच्छी since f of x is continuous at x is equal to a therefore limit x tends to 0 f of x is equal to f of 0 है ना. so देखो limit x tends to 0 f of x minus sin ax divided by sin x will be equal to 1 by a. चल तो limit x tends to 0 sin of ax फाइन हमको तले ax दरकार डिवाइड कले ax मल्टीप्लाई करबे x डिवाइड बाय sin x अछि या पे x दरकार मल्टीप्लाई कले x is equal to 1 by a. Now this will be equal to 1 sin x upon x, this also will be equal to 1, so 1 into ax divided by 1 into x is equal to 1 by a. X and x will get cancelled, so a is equal to 1 by a, so a square is equal to 1, therefore a will be equal to plus or minus 1. बुझिगला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो f of x equal to this गोटे लाइन तो मिस है क्वेश्चन is continuous at x equal to 1 is continuous at x is equal to 1 find a and b. function given continuous. जदि function continuous अच्छी at x equal to 1 तो limit x tends to 1 minus f of x will be equal to limit x tends to 1 plus f of x will be equal to f of 1. ठीक है. so this is limit x tends to 1 minus less than 1 रो function रो value रहेगा ax square plus b equal to
greater than 1 रे function रो value limit x tends to 1 plus greater than 1 रे function रो value होला 2ax minus b and that is equal to 1. तो x को 1 करिया तो a into 1 रो square हेगला 1 plus b equal to 2a into x रो value 1 minus b and this is equal to 1. So this is a plus b equal to 2a minus b and this is equal to 1. So a plus b is equal to 1 and 2a minus b is equal to 1. This is equation 1, this is equation 2. दो चीजों को ऐड करते हो, b cancel होगा, 3a is equal to 2, so a is equal to 2 by 3. Now use a in equation 1. Put कर दियो value. Put कर ले कौन होगा 2 by 3 equation 1 रे put कर दो plus 1 equal to 1. तो b is equal to 1 minus 2 by 3. So 3 minus 2 will be equal to 1 by 3. So b is equal to 1 by 3. तो a हेगला तुम्हारा 2 by 3 और b हेगला 1 by 3. ए टाइप के क्वेश्चन एमती टाइप रो क्वेश्चन आसी पारे. क्वेश्चन 3 हेगला, क्वेश्चन 4 हेगला जोटी कांस्टेंट थाउचे एमती टाइप रो क्वेश्चन केबे आसो. सो दैट sin x is continuous for every real x. For every real x आमे जानते sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से तार डोमेन रे सब रियल वैल्यू पे कंटीन्यूअस हो. तथापि हमको चेक करियो पड़ियो. कौन करिया गिवन f of x is equal to sin x. f of x is equal to sin x. x belongs to real number है ना. तो limit x tends to let h belongs to I. Limit x tends to h है ना. f of x is equal to तो आमे गोटे रियल नंबर नेगले h है ना. h रे आमे चेक करिया whether the function is continuous or not. तो limit h x tends to h minus कौन लिखा h tends to limit x tends to h minus f of x is equal to limit h tends to 0 है ना f of a minus h. This is equal to sin of a minus h which is equal to sin a. Right hand limit लिखिए limit x tends to h plus f of x is equal to limit h tends to 0 f of 0 plus h. 0 plus h equal to sin of 0 plus h is equal to 0 जगह a अच्छी थी तो a plus h is equal to sin a. h को 0 कट ले sin a. Therefore since LHL is equal to RHL. LHL equal to RHL. Therefore f of x is continuous at x is equal to h where h belongs to R for every real number. देखो क्वेश्चन कौन कहछि. क्वेश्चन कहछि f of x equal to 1. f of x रो वैल्यू 1 हो जतल x कोन हो रैशनल नंबर और 0 हो जतल x कोन हो इरेशनल नंबर. Is discontinuous for all x not equal to 0 belongs to I. What a real number लीजिए. let a belongs to R. तो जो रियल नंबर हो रैशनल भी है पारे इरेशनल भी है पारे. If a is rational, if a is rational, then f of a equal to 1. Rational by value कौन कुछ 1. If a is irrational, then f of a will be 0. तो हम आगे चेक करियो रैशनल का. जदि a rational है, if a is rational, if a is rational, लेफ्ट हैंड लिमिट कौन है जो लेफ्ट हैंड लिमिट है जो f of a minus h. f of a minus h. This is equal to 1 or 0 depending on a minus h is rational or irrational. यदि a rational होची a plus h कौन हो
आमे किछ कहि परिबानी a माइनस कोन हो आमे किछ कहि परिबानी तो a माइनस h एंड right hand limit कोन हो f of a plus h. This is also equal to 1 or minus 0. We cannot say whether it is always rational or always irrational. जदि a rational हला आमे कहि परिबानी कि a plus कोन हो rational हो कि irrational हो. Similarly जदि a irrational हला then also we cannot say a minus h and a plus h both are rational or irrational. Therefore LHL will not be equal to RHL. Therefore limit does not exist. Limit does not exist. जदि limit exist करियोनी यार मतलब f of x will be discontinuous. Similarly for rational. Similarly for rational numbers also. जदि rational number हेगला f of a plus h should not be equal to f of a minus h since they do not exist. Since they do not exist. Okay, so the function will be always discontinuous. कौन क्वेश्चन दिस देखो फंक्शन को हमको कंटीन्यूअस प्रूफ करियार अछि एट x इक्वल टू 0 डिसकंटीन्यूअस फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0 जदि x ता 0 सहित इक्वल न हैला माने डिसकंटीन्यूअस हो जोटा हमें प्रीवियस क्वेश्चन रे प्रूफ कर दीचे है ना डिसकंटीन्यूअस जदि x इक्वल टू 0 है व्हेन x इज इक्वल टू 0 f of 0 will be always equal to 0. So LHL equal to limit x tends to a minus f of x is equal to limit h tends to 0 f of a minus h. This is equal to either h or minus h. H if h is rational and if h is irrational. Plus h जतल h कौन हो rational minus h हो जतल h हो irrational. But since h tends to 0, both will be equal to 0, which is equal to f of 0. Therefore, f of x is continuous. F of x is continuous. And discontinuous we have done in question number 6. Discontinuous time question number 6 से कर दीजिए. So that the function f of x equal to x if x is rational and 0 if x is irrational is discontinuous everywhere except at x equal to 0. Let 0 रे discontinuous हो at except is discontinuous everywhere सबू point रे discontinuous हो देखो let x belongs to let a belongs to r and let x is equal to a which belongs to r. X को बटा में रियल नंबर नहीं तो x can be rational or x can be irrational. तो लेफ्ट हैंड लिमिट कौन है f of a minus h limit h tends to 0 है ना. So this is equal to limit h tends to 0 f of a minus h will be equal to f of a minus h will be equal to either a minus h or 0. Either a minus h or 0. A minus h will be equal to a since h is equal to 0 or 0. This is if x is rational. This is x is rational and this is if x is irrational. So this is a and this is 0. So they do not exist. Therefore, LHL does not exist. Hence, f of x is discontinuous. कहीं ना LHL RHL दुईटा जगह exist करियो पड़ियो ना exist कले हम कहि परबे कि दुईटा जगह equal or not equal जदि exist ही होनी माने discontinuous है ना. f of x equal to this when x is not equal to 0 and 0 function is continuous. Function is continuous at x is equal to 0. এটা আমি
क्वेश्चन नंबर 1 रे कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कौन हो देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x 0 माइनस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x into sin of 1 by x, not left hand limit है, এটা लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x कर दियो, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x इक्वल टू x टेंड्स टू माने दुईटा जाक हेजु, राइट दुईटा जाक हेजु, तो x into 1 by x मु कोन कहथि x रो वैल्यू 0 हबो into sin 1 by x मतलब फाइनाइट वैल्यू हबो बिटवीन -1 to 1 कहथि sin x रो वैल्यूटा सब बेले -1 रो +1 भीतर रहलो तो फाइनाइट वैल्यू जतल 0 रे मल्टीप्लाई हे जे सब बेले 0 हे जे काइन एटा फाइनाइट ता जद इनफाइनाइट हेता तो नॉट डिफाइंड हेता हां व्हिच इज इक्वल टू f of 0 देछ ना 0 देखो, therefore f of x is continuous at x is equal to 0 बुझियला एटा हम कर सकते हैं। prove that e raised to x minus 2 has a solution between 0 and 1 ये कौन देछि prove that ये जो फंक्शन अछि let f of x is equal to e raised to x minus 2 है ना has a solution between 0 and 1 एंती कहछि ना, तो a belongs to 0 and 1 एंती करते a belongs to let f of x equal to this and a belongs to 0 and 1, f of a is equal to e raised to a minus 2 एंती गेला। now 0 plus रे 0 minus रे लिमिट देखते हो, limit x tends to 0 plus f of x is equal to limit এটা x tends to होगा ना, limit x tends to 0 plus f of x equal to limit h tends to 0 f of 0 plus h is equal to limit h tends to 0 e raised to h minus 2, 0 plus h is h, so e raised to 0 will be e raised to 0 minus 2, e raised to 0 will be 1, 1 minus 2 equal to minus 1 which is equal to f of 0 and limit x tends to 1 minus 0 plus रे देख ले 1 minus रे देख limit x tends to limit x tends to 1 minus माने इंटरवल कोन होछ हमर 0 to 1 भीतर अछि ना, आमे गोटा एम्ति वैल्यू ले जोटा 0 to अधिका आ गोटा वैल्यू नै छै जोटा 1 to कम माने 0 to 1 भीतर रहै नै कि, so this f of x is equal to limit x tends to limit h tends to 0 f of 1 minus h ना, तो 1 minus h is equal to limit h tends to 0 e raised to 1 minus h minus 2, h tends to 0 तो e raised to 1 will be e minus 2 and f of 1 is equal to e minus 2, so at 0 and 1 f of x is continuous, therefore there must exist a 0 माने root between 0 and 1। Similar type of question खाली function अलग আছে, let f of x is equal to x raised to 5 plus x plus 1, तो f of 0 equal to 1 and f of minus 1 is equal to minus 1 plus 1 is equal to minus 1. Now f of minus 1 plus f of minus 1 plus equal to limit x tends to x await limit कौन है x tends to minus 1 plus f of x is equal to limit h tends to 0 f of minus 1 plus h is equal to limit h tends to 0 minus 1 plus h raised to 5 plus minus 1 plus h plus 1, h को 0 कर देले तो minus 1 रो पावर 5 plus of minus 1 plus 1, तो ये दुटा कैंसिल हो गला minus 1 which is equal to f of minus 1 which is equal to f of
minus 1. Similarly, limit x tends to 0 minus f of x equal to limit x tends to 0 f of 0 minus h, which is equal to f of minus h, and that is equal to limit h tends to 0 minus h raised to 5 plus of minus h and plus 1. So this is equal to 0 plus 1, which is equal to 1, and that is equal to f of 0. Therefore, f of x exists and continuous at 0 and minus 1. Therefore, there must have a root. Therefore, there must have a root of the function. But the function root is root of the function f of x between minus 1 and 0. बुझे? तो यही एक्सरसाइज रो प्रथम 3टा क्वेश्चन टिके भलो कि देखियो 2 3 एंड 4. बाकी कांसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन गुडा एग्जाम रे आसीबो. यूजुअली आसुनी गुडा. क्वेश्चन नंबर 2 3 4 तो देखियो. एमती हमर वीडियो आसीबो. आ आमे गोटे क्रैश कोर्स स्टार्ट करियो चाहूछु. एग्जाम डेट टा हमको इंटिमेट करियो. जदि एग्जैक्ट डेट जानछु तो एग्जैक्ट डेट कहबो कमेंट सेक्शन रे, और प्रोबेबल और टेंटेटिव डेट टा हमको कहबो, सो दैट तार 45 डेज बिफोर विल स्टार्ट ए क्रैश कोर्स. आ सेटा पूरा फ्री रहबो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो कांसेप्ट बिल्डिंग सहित सब आमे प्रीवियस ईयर रो अराउंड 10 12 ईयर रो क्वेश्चन को आमे कंटेन करी ईच चैप्टर पे आमे 2-2टा रिवीजन लेक्चर रखू, so that everybody will be getting benefited from that. So meet you next lecture. Until then, bye bye.